Hello and welcome to this second part of the forms of democracy tutorial. And in my last tutorial, that was a first part of forms of democracy, we have covered social democracy, economic democracy, industrial democracy, people's democracy, and direct democracy. And you will find the link of this tutorial in the description box below. Now today we are going to continue in the second part of forms of democracy, and we shall talk about rest of the other forms of democracy, such as representative form of democracy, presidential form of democracy, parliamentary form of a democracy, authoritarian form of a democracy, participatory form of democracy, and last Islamic democracy. आप सबका स्वागत है। ये दूसरा पार्ट है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी का। लास्ट पार्ट में हमने 5 पहले फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कवर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बाकी जो बचे हुए हैं फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी उनके बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वेल, representative form of democracy or direct democracy is when people choose to vote for who will represent them in parliament. Now this is the most common form of a democracy found across the world. In this form of a democracy, a small group of representatives can use their expertise in policy making and by freeing everyone else to pursue their other tasks. Well, in addition to this, it emphasizes on protecting the rights of not only majority of the people in the state but also the minorities. By electing a more qualified representative, a minority population would be able to vocalize its grievances in more efficient manner. Besides this, the downside of this form of a democracy is that the elected government may fail to pursue the interests of the citizens. Moreover, most of the representative democracy of the world consider themselves to be liberal democracies, and that is because they value the needs of their individual citizens more than that of the entire state. Now, so when we talk about a representative form of a democracy, then we need to understand here that representative form of democracy is, in short, a indirect democracy. Now what happens here in the representative form of democracy is that people choose their own representative, and those representatives will later on will represent themselves on behalf of them in the assembly, and therefore this is the most common form of a government you'll find anywhere in the world. And the much important reason is this, because nowadays we have a big countries, we have a big population, and it becomes very difficult for any country to have a direct democracy. As I said in my last tutorial, we still have an exception in Switzerland where people have a direct form of a democracy. But by and large in the world today, because of the challenges of putting all the people together and to discuss about various issues, therefore people have gone for the representative form of democracy. जब हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। और वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि उसका यही कारण है कि यहाँ पर लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, और बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव हाउस में जाके ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल रेज द इश्यूज ऑफ द पीपल। और ऐसी डेमोक्रेसी बाय एंड लार्ज हमारे दुनिया में बहुत सी डेमोक्रेसीज है। नाउ वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ representatives can use their expertise in policy making. Now this is very important, that one of the very important fundamental point of understanding representative democracy is that we elect those representatives. In short, it is a small group of a representative. Example, it differs from the state to state. Now the state which I come from, that is Goa, we have a 40 representative in our state assembly. Now these 40 representative is small group compared to the large population of the state. So what this small group does, it
has expertised in certain areas. All of these representative, whoever they are in the assembly today, they know what is policy making, they know what is governance, so they use their expertise in bringing the laws, bringing the rules and regulation for the welfare of the state. Similarly, when we see this example at a national scale, then we have our own representative whom we have elected as a लोक सभा रिप्रेजेंटेटिव, और वो लोग वहाँ पर बैठ के पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, पूरे देश की व्यवस्था संभालते हैं। और यही एक खासियत है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कि छोटा ग्रुप जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने बलबूते पर अपनी एक्सपर्टाइज के वो अपना एक्सपर्टाइज यूज़ करते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं इन वेरियस पॉलिसी मेकिंग, उनको एक्सपीरियंस है गवर्नेंस मतलब क्या, कानून कैसे बनते हैं, डेमोक्रेसी कैसी चलती है, ये सारे अपने एक्सपर्टाइज यूज़ करते हैं एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, एक पॉलिसी तैयार करने के लिए देश के लिए, और उसके हिसाब से देश आगे चलता है। नाउ वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट the downside of the form of a democracy is that elected government sometime or may fail to pursue the interest of the citizens, and that is very common. It is not clear cut, as I said, that democracy is not a best form of a government, but as of now it is a good form of a government we have. And when we say this, then we also have to remember that sometimes these representative whom we elect to take care of our issues, sometimes they fail to pursue the interests of the people. They don't understand what exactly people need, and we have seen this by and large over a period of time, that at many instances the elected representative have somehow failed to pursue and to deliver the choices and the issues of the citizens. हमें ये भी समझना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक डाउनसाइड भी है, और ये जो सरकार बनती है इसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी जो प्रॉमिसेस जो किए थे लोगों को, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए होंगे, आई डोंट हैव टू गिव यू द एग्जांपल्स, बट यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड आवर कंट्री। इलेक्शन के टाइम पे बहुत से ऐसे प्रॉमिसेस होते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट अंत तक जब हम पहुंचते हैं तो कुछ डिलीवर नहीं होता है। ऐसे नहीं कि कुछ डिलीवर नहीं होता है, कुछ प्रॉमिसेस डिलीवर किए होंगे, बट बाय एंड लार्ज अभी भी बहुत से ऐसे आश्वासन दिए थे लोगों को, वो अभी तक फुलफ़िल नहीं किए गए हैं। और यही प्रॉब्लम है दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, दैट by and large government have failed to pursue the interests of the citizen, and therefore we need to understand that representative form of a government is by and large considered to be a very liberal government, and therefore we have around the world that the liberal democracies have always stood for the people, and it is because in liberal democracies they value the needs of their own citizens rather than the entire state. So this is all about the representative form of democracy as a sixth very important form of democracy. Moving on to point number 7, we have presidential form of democracy. Well, under the presidential form of a democracy, the president of the state has a significant amount of power over the government. He or she is either directly or indirectly elected by citizens of the state. Now we need to understand here that the presidential form of a democracy is a system where the president of the state has more power over the government, and such presidents are elected either directly or indirectly by the citizens. And we have an example like in US, Argentina and Sudan, they have a presidential form of democracy. And this form of a democracy has different working altogether. Here the heads of the state is always the head of the government, and because he is the head of the state and also the head of the government, he becomes or she becomes the ultimate power. No doubt there are checks and balance also within the presidential democracy, but by and large
It is a president stylish. It is a one-man show kind of thing wherein he would choose his own ministers. He would choose his own cabinet according to his own choice, and he will have ample power not only over the government but also over the entire country, and he always becomes the chief of the armed forces. He is a supreme leader in any form of a democracy. जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर दिए जाते हैं, और ये पावर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होते हैं और मोर देन द एनी गवर्नमेंट ऑफ द डे। और प्रेसिडेंट को हमेशा एक तो डायरेक्टली इलेक्ट होती है या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वहाँ के सिटीजन्स। और एग्जांपल हमने देखे हैं यूएस और अर्जेंटीना एंड सूडान। यहाँ पर ऐसे ही सिस्टम चलता है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और जैसे मैंने बोला, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट ही सबसे पावरफुल ताकतवर इंसान होता है। वो अपने कलीग्स, वो अपने काउंसिलर्स, वो अपने मिनिस्टर्स को खुद चूज़ करता है। जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने नुमाइंदे को चुनती है और वहाँ पे भेजती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सारे लोग सिर्फ प्रेसिडेंट को ही वोट करेंगे, वो किसी अपने लोकल पॉलिटिकल लीडर को वोट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी functions, and it is one of the most important form of a democracy today we have in US, Argentina and Sudan. Moving on to point number 8, parliamentary form of democracy. Well, a parliamentary democracy gives more power to the legislature, very important. The executive branch derives its democratic legitimacy only from the legislature, that is the parliament again, and therefore we need to understand here that in parliamentary form of a democracy, the powers are with the parliament. The powers are with the legislature who makes the parliament. Example, Indian democracy is also known as parliamentary form of democracy because we have a parliament which is made out of legislature, and these legislatures are directly elected by the people, and they have given them the power. The constitution have given them the power, and therefore any issue, any policy has to be debated in the parliament by the legislature. They will vote on those issues, and depending upon the majority, depending upon the voting, some policies get implemented in the system. जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर जो पूरा पावर्स है वो लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। और ये लेजिस्लेचर कौन होता है? लेजिस्लेचर वही इंसान होता है जो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आता है, और उनको इलेक्ट करने वाले सिटीजन्स ही होते हैं। और हमारे सिस्टम में, जैसे हमारे देश में, वी ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं। वो वहाँ पर लेजिस्लेचर का काम करते हैं, मतलब कानून बनाना, व्यवस्था को ठीक करना, व्यवस्था को संभालना, पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करना, XYZ। और जो कुछ भी होता है पार्लियामेंट में, जैसे आपने टीवी पर देखा होगा, बहुत तमाशा भी होता है, बहुत डिस्कशन भी होता है, डिबेट्स भी होते हैं, और अंत में जाके कुछ पॉलिसीज़ निकलती हैं पूरे देश के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, दैट the powers are given more to the legislature. Moving on, the elected legislature, that is parliament, choose the head of their own government, and that is prime minister, and also may remove the prime minister at any time by passing vote of no confidence. हमें ये भी समझना चाहिए कि जो पार्लियामेंट जो चलता है वहाँ पर सारे लेजिस्लेचर मिलकर अपना एक लीडर चुनते हैं, और उस लीडर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, और वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे वो अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, उन्हें वो भी कानून है, उन्हें वो भी एक अधिकार है कि अगर उनको वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए तो उसको निकाल भी सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट लेजिस्लेचर्स विल चूज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. They will choose their leader, and that leader is always going to be a prime minister. And if they don't want that prime minister, then they can always bring a change in the prime ministership. Therefore, we also have to remember that the head of the state is always a president,
and is different from the head of the government, that is prime minister, but both have varying degree of powers. Now, we also have to remember that the way legislature chooses their own leader and he becomes the head of the government and also called as prime minister. Similarly, we have the head of the state, and head of the state is always president. Head of the state is different from the head of the government, that is prime minister. So president अलग है और प्राइम मिनिस्टर अलग है. प्राइम मिनिस्टर को हमेशा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, और दोनों के जो पावर्स है वो बहुत डिफरेंट है. इट इज़ ऑलवेज अ प्रेसिडेंट in a very democratic way and constitutionally that he appoints somebody as a head of the government, and that somebody is always prime minister, and therefore prime minister is always answerable to the head of the state, that is president. So this is all about the parliamentary form of a democracy where the powers are given to the legislature. Legislature elect their own leader as the head of the government, and that is the prime minister, and the entire functioning and working of the parliament takes place according to the rules and regulations set out in the constitution. And last and very important, that the head of the state, that is president, is always different from the head of the government, and that is prime minister. So this is the eighth form of a government, that is parliamentary form of a government, where parliament has the more power. Moving on to point number 9, we have authoritarian democracy. Well, authoritarian form of a democracy is when only the elites are a part of a parliamentary process. It's very simple that whenever we talk about authoritarian form of a democracy, it is basically the rule of elites. Elites are the part of the parliamentary process. That means other individual, other people do not have a right to be a part of a parliamentary process. Only elites are given priority. Only elites are given the right to contest the election, and they only become the member of parliament. Therefore, the individual of the states are only allowed to vote for their chosen candidate, but regular people cannot enter elections. And therefore, very important, in the end, it is only the ruling elite that decides on various interests of the state's population. An example is today's modern day Russia under Vladimir Putin. Now we have to understand here that in authoritarian democracy, the functioning of authoritarian democracy is carried out by the only elite class, elite people, people who have a contact directly with the system. When it comes to the individuals of the state, they are allowed to only vote. Regular people can only vote, but regular people cannot enter into the election process of contesting the election. That means only elite class of the society will have a right to contest, and common men of the society of that particular country have only right to vote and not to right to contest the election. And we have the example of modern day Russia under Vladimir Putin. Now this is all about what you understand authoritarian democracy. जब हम authoritarian democracy की बात करते हैं तो authoritarian democracy एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर जो elite लोग होते हैं, elite माने अभिजात वर्ग, समाज का उत्कृष्ट भाग, ये लोग ऐसे लोग हैं जो सोशल में, इकोनॉमिक्स में सबसे ऊपर है. बहुत बड़ी क्लास है ये, सबसे ऊपर की क्लास होती है कौन से भी सोसाइटीज़ में. दे हैव देयर कॉन्टैक्ट्स इन द सिस्टम, और अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसे ही लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है. जो आम आदमी होता है, जो कॉमन इंसान होता है, वो इलेक्शन में सिर्फ अपना मत डाल सकता है, वो अपना सिर्फ वोट दे सकता है. उसको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का अधिकार नहीं है. और अंत में यही होता है कि जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, जो समाज का उत्कृष्ट भाग है, वही बाद में एंड ऑफ द डे पावर में बैठते हैं, वही बाद में पार्लियामेंट्री प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं, वही पॉलिसीज़ बनाते हैं. और जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी है,
उन्हें कभी भी अपना ओपिनियन देने का हक नहीं होता है। और ये एग्जाम्पल आज मॉडर्न रशिया में है, जहाँ पर अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, वेयर ओनली एलिट पीपल आर रूलिंग द स्टेट and poor people are just voting them, and they don't even have a right to contest the election. And this is how the authoritarian form of democracy functions, where the elites become the part of the parliament and the parliamentary process, whereas individual of the state have only right to vote, but they don't have right to contest the election, or they don't have a right to enter into the election process. So this is all about a simple point to understand authoritarian democracy. Moving on to point number 10, participatory democracy. Well, participatory democracy is exactly opposite of an authoritarian democracy. This form of government, that is participatory form of democracy, is just opposite to the authoritarian form of democracy. What happens in authoritarian form of democracy, where only elites have the power to contest the election, only elites becomes a part of the parliamentary process. Here in participatory democracy, anybody, in fact even the poorest of the poor man, can enter into the election process. He or she has a right to contest the election. This is just what participatory democracy is, just opposite to authoritarian democracy. Now we also have to remember here that there are different types of participatory democracy, but all of them tried their best to create an opportunity for all the members of the population to make meaningful contribution to the decision making process, and therefore it empowers the disempowered by breaking up the state into a small network, and prefer to empower community based on grassroots politics. Now we have to understand here that participatory form of democracy, what does it do? It basically tries to empower all the people, especially empower to those who have been never given any space. And how do they empower people? By breaking up the state into a smaller network, basically taking the democracy to a grassroots level. Very important. Breaking up of the state doesn't mean that breaking of the state physically. What does it mean is that taking the power which is at the center to the grassroots level. This is called decentralization of power. The decision which is taken up at the center always becomes centralized power. And what we need, if people need to be part of the democracy, if we need people to participate in the democracy, then the power has to be decentralized. The power has to be taken down back to the grassroots level, where we have the real citizens. And therefore we have a wonderful concept in India called Panchayati Raj system. And Panchayati Raj system is such a system which actually create a space for a participatory democracy. This is a wonderful example which we have to remember, that in a participatory democracy we have to empower that section of the people which have been isolated for a long time, which have been disempowered, and therefore we need to empower them by breaking up the system, breaking up the state into a smaller network, taking that power of taking the decision to a grassroots level, especially at the village level. And therefore it values deliberation and discussion rather than merely voting. And therefore in participatory form of democracy, what we value is a deliberation and a discussion rather than just voting. जब हम पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट टू अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे हमने देखा, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एलिट जो होते हैं वही अपना सरकार बनाते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपना अधिकार है पार्लियामेंट में जाके बैठने का और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का. लेकिन यहाँ पर कैसा होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, जस्ट अपोजिट है. मतलब यहाँ पर कोई भी, even poorest of the poor man, irrespective of which caste, color, creed he or she belongs to, have the power, वो उनका अधिकार है कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे.
और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्या करती है? ये बेसिकली क्या करती है कि जो लोग सालों से दबे हुए हैं, उनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको कभी किसी ने कुछ दिया नहीं, वैसे लोगों को वो पावर देते हैं। मतलब वो क्या करते कि जो पावर सेंट्रलाइज है उसको उठा के डिसेंट्रलाइज करती है। मतलब जो डिसीजन लेने का जो पावर आज सरकार के पास है वो पावर लोगों को देना। मतलब हर एक गांव में, हर एक शहर में उनकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा हमने हर एक गांव को आज मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा है। वहाँ पर उनकी खुद की पंचायत है, वो खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं और खुद अपनी पंचायत चलाते हैं। जो भी विलेज में कुछ इश्यूज़ है, जो भी विलेज का कुछ प्रॉब्लम है, वो सिर्फ लोग इकट्ठा मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। सिमिलरली हमारे शहरों में आज म्यूनसिपैलिटीज़ है, ऑलमोस्ट another form of a system of a governance at cities level. So basically participatory form of democracy पूरा जो पावर है जो कि एक जगह पर टिका हुआ है, एक सेंट्रल में है, उसको डिसेंट्रलाइज करती है और लोगों को एम्पावर करती है। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मान लो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान आज हमारे गांव में जो हो रहा है उसकी कुछ उसको कल्पना भी नहीं होगा। हमारे गांव में आज प्रॉब्लम्स क्या है वो उनको कभी भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर है और जब तक यहाँ से न्यूज़ वहाँ पहुँचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इसीलिए आज हमने हर एक गांव को एम्पावर किया है, हर एक सिटीज़न को एम्पावर किया थ्रू पंचायती राज, एंड वी एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी। और अंत में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का जो वैल्यू है वो पूरा डेलिबरेशन और डिस्कशन के ऊपर है, और ना कि सिर्फ वोट डालो और निकलो वहाँ से। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेलिबरेशन और डिस्कशन। मतलब डिस्कशन करो, बातचीत करो, डिबेट करो, और उस डिबेट से ही कुछ अच्छी चीज़ें गांव के लिए हो सकती है या शहर के लिए हो सकती है, और वहाँ से कुछ आइडियाज़ निकल सकते हैं और वो आइडिया सबको बेनिफिट कर सकते हैं। और इसीलिए द 10th वेरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी is about participatory form of democracy where people have to participate into the decision making process rather than just cast your vote and go away from the system. And the last very important form of a democracy today we have is Islamic democracy. Well, this form of a democracy seek to apply Islamic law to public policies while simultaneously maintaining the democratic framework. So what this form of a democracy does, that it seeks to apply Islamic law to public policy. And now when we talk about Islamic law, it is basically they're talking about Shariat law, okay? And they also wanted to maintain the democratic framework of their state. Now Islamic democracy has three main characteristics. First, the leaders, which are elected by the people. Second, everyone is subject to the Sharia law, including the leaders. And third, the leader must commit to protecting the Shura, a special form of a consultation practiced by Prophet Muhammad. So basically Islamic democracy has these three very important elements wherein the leaders are being elected by the people, मतलब लोग वहाँ पर उनको इलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एवरीवन इज़ सब्जेक्ट टू शरिया लॉ, उनका शरिया कानून है और उस कानून के तहत सब लोग उस कानून के तहत आ जाएंगे, इंक्लूडिंग उनके लीडर। और थर्ड जो है वो है दैट लीडर मस्ट कमिट टू प्रैक्टिस शूरा, which is a special form of a consultation which was practiced earlier by Prophet Muhammad. So these are the three most important characteristics of Islamic democracy. और आज की तारीख में ये जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है वो प्रैक्टिस होती है ईरान में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में. So these are the total 11 different forms of the democracy which I have tried my best to cover up in these two parts. So feel free to comment on these tutorials, let me know your opinion,
and I hope you have really understood the 11 different forms of a democracy, and see you soon in next tutorial. Till then, take care.